दैट्स वेयर यू नीड टू फाइंड ये लोग असुर किस तरफ काम करें, धन के लिए काम करते हैं। जैसे हम लोग हिरण्यकशिपु बोलते हैं, हिरण्यकशिपु मीन्स आफ्टर गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड, क्लियर होता है उसका। तो नाउ अगर हम आज का सिचुएशन देखें टोटल, तो जियोपॉलिटिक्स बहुत ही सरल है। मतलब कि आपने मेरा आर्टिकल पढ़ा होगा कल Satology.com पे, जिसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया था कि वेस्टफालियन ने जो आर्टिफिशियल सॉवरेंटी बनाई थी वो क्रिश्चियन कंट्रीज के लिए थी, यूरोपियन कंट्रीज के लिए थी। जब आप दूसरे देशों पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती। तो यूनाइटेड नेशंस और ये सब ऑर्गेनाइजेशन है उसी वर्ल्ड व्यू को लेके चलते थे, और वो फेल हो गया बिकॉज सबको पता लग गया कि ये यूरोपियन देश जो है हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस बनाया हुआ है ताकि कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस को चालू रख सकें। इसके लिए भारत जैसे देश जो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब 150 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग किसी दूसरे देश में के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो 140 करोड़ लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस डजंट वर्क, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस बना था वो यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज के लिए, लग्जमबर्ग के लिए बना हुआ है, नॉर्वे के लिए बना हुआ है। दीज आर स्मॉल कंट्रीज विच शुड नॉट इवन एग्जिस्ट। क्यों चाहिए नॉर्वे अलग से? क्योंकि चर्च में इतनी लड़ाई होती है आपस में, तो उनको छोटी छोटी कंट्रीज चाहिए। दैट इज वेस्टफालियन। और सबने रोमन एम्परर के विरुद्ध बनाए हैं सारी देश। तो रोमन कैथोलिसिज्म से बचने के लिए कंट्रीज बनी हुई है छोटी छोटी, है ना। डिवीजन जो यूरोप का है, छोटी छोटी कंट्रीज बनी हुई है। यही मेन रीजन है, चर्च के बेसिस पे बनी है सारी कंट्रीज। तो वेस्टफालियन मॉडल तो चलता नहीं है कहीं पर। तो भारत को बहुत बड़ी सेनाएं रखनी पड़ेगी, बिकॉज दीज पीपल, ये नोचने खसोटने वाले पैरासाइट्स, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और अभी इनको बड़ा दुख हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है इनकी कंट्रीज में, क्योंकि इनके बर्थ रेट्स आर सो लो, दे टू इम्पोर्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू कीप अप द पॉपुलेशन। नहीं तो कोई गार्डन में काम कौन करेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी? सबको तो आप वो दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, स्टेट बेनिफिट्स। तो कम्युनिज्म भी इन कंट्रीज में है। मैंने आपको शुरू से बोला था कि कैथोलिक वेटिकन से ही कम्युनिज्म आता है, सोशलिज्म आता है। ये जितनी भी फिलॉसफीज है जिनमें गरीबी फैलती है, सारा वेटिकन से आता है। क्योंकि रोमन रोमन एक मेथोडोलॉजी था, रोमन माइंडसेट था कि आप प्रजा को रखें पुअर, ताकि वो आप पे डिपेंडेंट रहे। समझा? वो भारतीय माइंडसेट नहीं है। भारतीय माइंडसेट जो है, वैदिक माइंडसेट है, लेट प्रॉस्पेरिटी बी फॉर ऑल। दैट इज द हिंदू माइंडसेट। हिंदू माइंडसेट मीन प्रॉस्पेरिटी सबके लिए, सब सब धनी हो, सब सुखी रहे। सर्वे सुखिनो भवन्तु, लेट एवरीबडी बी हैप्पी। वो वेस्टर्न यूरोपियन मॉडल नहीं है। तो यूरोपियन मॉडल इज बिल्ट ऑन विन लूज मॉडल, दैट इज बाउंड टू फेल। पर उससे बचने के लिए आपको अपने शस्त्र चाहिए, अपनी सेनाएं चाहिए, अपनी नेवी चाहिए, क्योंकि दीज पीपल विल अटैक यू इफ दे फाइंड यू वीक। और इसीलिए भारत को बहुत बड़ी सेना रखने की जरूरत है। भारत को जरूरत है क्योंकि 140 करोड़ लोगों की रक्षा करनी है। समझा? तो भारतीय सेना इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरे यूरोप को एक साथ ले ले। ये साइज होना चाहिए आइडियली। अगर मैं महाभारत युद्ध में थोड़ी बात जीते हुए समझता हूँ, तो इसीलिए मेरी नई पुस्तक में मैंने काफ़ी महाभारत युद्ध के ऊपर ही मैंने पूरा विश्लेषण किया है। अगर उसको मैं समझता हूँ, तो अगर युधिष्ठिर होते आज, तो भारत की सेनाएं आज की जो दिखती है सेना, उससे 3 गुनी होती, 3 से 4 गुनी, और पूरी दुनिया में घूमती एक्सपीडिशनरी फोर्सेस। लेकिन चलिए, भारत अभी जग रहा है वापस, और शायद ये चेंजेस होगा। तो आज मैं शेखर जी से, एडमिरल वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा से यही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि हाउ प्रिपेयर्ड वी आर। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, ईरान के ऊपर अगर किसी को आक्रमण करें, ये सब झुंड में अटैक करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर झुंड में आएंगे, नेटो के अंदर झुंड में आएंगे, ये सब झुंड में आने वाले हैं। तो भारत की मिलिट्री अलायंसेज ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे भारत को जरूरत पड़े तो दूसरे की सेनाएं भी भारत के साथ मिले। तो कोई जरूरत नहीं है, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, हमारे पास इतना मैन पावर है कि वी कैन, मतलब फ्लड कर सकते हैं मिलिट्री में। लेकिन फिर भी वो जरूरी है अलायंसेज, मिलिट्री अलायंसेज आर नेसेसरी, लेकिन दुश्मनों के साथ अलायंसेज नहीं होनी चाहिए।
जो आपके विरुद्ध आपको षड्यंत्री करता रहता है वो आपका अलाई कैसे हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है? तो all these things I'm going to ask him. He's joining now. So the the reason why I'm saying this point is because this is the time where we all have to plan much deeper than today. So he has joined now. So without delay, let us welcome Vice Admiral Sheikh Hussain. Welcome to the. Thank you very much, Aditi. I'm sorry I'm a bit late, but too many commitments. I know you. I was just telling the viewers, you have the right person here, and because he's busy, that means he's very valuable. ये मैं बता रहा था. My apologies to all your viewers and listeners. I really very sorry about that. I नहीं missed out yesterday's RV also, and today कि आप also. देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए इतना कर रहे हैं, so Oh, this that is is true. the whole lifetime of service to the country, so That is hats off to you. So मुझे how do you see the entire Middle East situation from your perspective? see without doubt it is on boil, and this is not something new. This is a very old, shall I say, fight between Iran and Israel. And unfortunately, or fortunately for Iran, it used to be through the proxy, the 3H, the Houthis, the Hamas, and the Hezbollah. But now, for the first time, or maybe second time, that they have come out openly, and they have fired the missiles on the Israeli land. Many of it has been intercepted, but I think that it's not going to die down, but it will limited to these regions. It will not spread out anywhere, to my mind, because nobody has a stomach to do a big combat. As you know that yesterday there was some talk that it has fallen on some Russian airfield. So that's not correct, because that airfield doesn't belong to Russia. Except that in Syria, or in Syria, these are the airfields which have been built by the Russians. It has got a lot of Russian equipment, but Russia doesn't have any airfield its own. Doesn't own any airfield there. So, but Russia has warned that if anything on its own soil, they will respond properly. But I don't think these two superpowers will respond directly against Iran. Russia is, of course, friendly to Iran. But the US unlikely to openly do any attack on Iran till such time the Iranian missiles or any effort of Iran to attack the American assets, for example, the ships in Mediterranean, or maybe the shall I say the oil tankers, the ships, the American ships which are carrying the goods from the through the Red Sea. But it's not going to be easy, because now Israel has really gone too far to listen to anybody. It's a as they say, clash of civilization, and it is not between Christians and Muslims. It is between the Shia Muslims and the Jews. And you've been hearing Prime Minister Netanyahu. He is quite bold to say that he is not going to sit tight till such time he demolishes both Hamas and Hezbollah. And as you know, that Nasrullah has been killed, and the one more guy, senior guy, has been killed. Hamas has been really pushed against the wall in Gaza. But mind you, the terrorist organizations don't vanish just because the leader has been killed. Because when the one leader is killed, they know that they will be killed. So the next guy takes over. The problem is that it is a battle of ideology.
ideology between Shia Islam and the Jews. It's a question of ideological differences. And these ideological differences don't go away till such time you sit down and talk about it, which is unlikely to happen. And ideological differences can only be bridged by de-radicalization. There has to be a de-radicalization program, but who's going to do de-radicalization of Iran? Who's going to do it for Hezbollah? Who's going to do it for Hamas? Who's going to do it for Houthis? So we are in a quite a bad situation, really, and it's affecting the whole world. If you see the oil prices have already gone up. There are less ships going through Red Sea now. They are going around the Cape of Good Hope. It takes about a week extra, 6 days extra, and costs more money. Insurance costs have gone up a lot. So I think that the impact of this is going to be quite big, and I hope that there are people there are countries who are constantly making an effort to bring some peace. But now looks like even Turkey seems to be raising its head, though they have not done it so far. But the Kurds in Turkestan, Turkey is mainly Sunni, but the ones in Kurdistan, the Kurds are different, more like Shiites. So they have an internal problem, which if they don't say anything, it will be taken quite amiss. But the Arab world is by and large is keeping quiet. By and large, Saudi, United Arab Emirates, even Qatar, they have not made any statement against Israel. And there is a reason for it, because Israel was already in good relation with them. The India Middle East trade corridor was being raided, and a lot of roadways, a lot of railway links have been established, and Israel is part of it.